Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Student, today we are going to start with our next subject, that is Civics. Chapter number 1, Introduction to our Constitution. Before starting our lecture, let's discuss a few things. Student, so many years in civics notebook we have been learning about rules. Where is rules? Student, why these rules are necessary in our life? There are rules in our family, in our school, in our village, city, right? Student, why these rules have been followed? Can you know that? हम ये रूल्स क्यों फॉलो करते हैं? स्कूल में, हमारे विलेज में, फैमिली में क्यों रूल्स होते हैं? सो दैट द एक्टिविटी कैरीड आउट स्मूथली, राइट? बट स्टूडेंट, देयर आर नो रूल्स इन फैमिली. सो फैमिली में क्या होता है? फैमिली में नॉर्म्स होते हैं. नॉर्म्स मीन्स आवर पेरेंट्स taught us about manners, about respects, how to behave in the family, right? So there are norms in a family. Where is rules then? Rules we follow in our school. In our school, there are rules regarding admission, regarding uniform and studies, right? If student, there were no rules in family school, then what happened? Yes, it become totally indiscipline, right? अगर हम rules follow नहीं करेंगे स्कूल में तो क्या होगा? Indiscipline हो जाएगा, right? So if we take part in different competition, student, what happened? We follow certain rules. If we not follow the rules in a competition we take part, what happened? We will be disqualified. Same student in a village or a city, they also run according to the rules. So in our day-to-day lives also, student, we follow rules. Why we follow rules? So that it create a good atmosphere, good environment all around. इसलिए हमको रूल फॉलो करना क्या है? बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ स्मूथली क्या हो? कैरिड आउट हो सके. अंडरस्टूड? सिमिलरली स्टूडेंट, आवर कंट्री is also carried out through a system of rules. हमारी कंट्री भी क्या है? हमारी कंट्री को भी रूल्स फॉलो करना पड़ता है. ओके, we are following rules in our family, in our school, in our village or city, but these rules are limited in nature, right student? हमारे जो फैमिली में, स्कूल में जो होते हैं, ये रूल्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. बट the rules which are following by a country to run the administration. See the word administration, student? The meaning of this word is management. Okay, to run the administration of a country, student, the rules are wider in scope. कैसे है ये? रूल्स बहुत ज़्यादा है. Understood student? So why I have discussed these things with you? Because today in this chapter we are going to learn everything about our constitution. I hope student you will understand this thing first. So now let's start our lecture. Let's see the meaning of constitution first. What is constitution? The book in which all the provision regarding the administration of a country are mentioned together in a systematic way is called constitution. Understood? Constitution क्या है? एक बुक है
जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑल रूल्स ऑल प्रोविजन एक सिस्टमैटिक वे में लिखे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? Why these constitutions are made, student? So that a country run smoothly. Now see student, our constitution is a lengthiest constitution in the वर्ल्ड. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या है, सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. इसलिए स्टूडेंट इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. क्या है ये? रिटर्न डॉक्यूमेंट है. बुक में लिखा हुआ है ना ये. सो इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. नाउ सी, गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल. गवर्नमेंट किस तरह फॉर्म होती है स्टूडेंट? रिप्रेजेंटेटिव्स हम इलेक्ट करते हैं. वी द जनरल पब्लिक स्टूडेंट वी गिव वोट्स. ओके, हमारे वोट्स देने के बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स होते हैं उससे क्या होती है, गवर्नमेंट बनती है. अंडरस्टूड? नाउ इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री एज पर द प्रोविजन. हमारे जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है स्टूडेंट, उसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. रूल्स रेगुलेशंस ये सब फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस रूल्स एंड प्रोविजंस दे आर द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. एवरीथिंग रिटन अबाउट द जनरल सिटीजन. ओके, नाउ स्टूडेंट, while making these laws the government have to follow the constitution. लॉ भी अगर बनाना होगा तो भी हमको क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होगा. सो स्टूडेंट, for each and everything we have to follow our constitution. If student the constitution is not followed, then what happened? The judiciary means student court. The court will declare those laws as null. Null means illegal and void or unconstitutional. राइट है ना स्टूडेंट? अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या डिक्लेयर होगा, इलीगल होगा. राइट. सिमिलरली सी एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल में रूल बना रहे हैं, अगर आप लोग वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इनडिसिप्लिन होगा. राइट. सिमिलरली उसी तरह कंट्री हैव टू फॉलो द रूल्स, द फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल. इफ नॉट then it will be declared as unconstitutional. So have you understood this concept, student? Okay, now let's see the next one, that is provision in the constitution. Now student, what are these provision? Provisions are about different things. Provisions जो है वो क्या है, अलग अलग है. First, it is about citizen, the right of the citizens. Citizens means student person who are born and brought up in a particular country. उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन. राइट. सेकेंड, इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड अ स्टेट. You student, you know, in election when we are elected the representative, right? इलेक्शन ड्यूटीज़ विल बी देयर. इलेक्शंस के बावजूद क्या होता है, इलेक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, वी इलेक्ट द पीपल, दे फॉर्म द गवर्नमेंट. सो रिगार्डिंग द सिटीज़न एंड द स्टेट, सिटीज़न मीन्स हम लोग, जनरल पब्लिक, और स्टेट, इन सब के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन में लिखा हुआ है. थर्ड, सब्जेक्ट ऑफ द लॉ आर टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट्स. Whatever laws are there, student, subjects means people, related to people, are made by whom? Are government. Restriction on government, jurisdiction of the state, etc. Restriction on government means government have to follow certain rules, certain regulations. The court, okay, if any matter is there, if general public, we can गो फॉर द कोर्ट, हम लोग कोर्ट में जा सकते.
we can fight for our right. So regarding about our citizen, हमारे बारे में, जनरल पब्लिक के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में, रूल्स के बारे में, everything student has been written in the constitution. Now student, almost all countries have accepted the principle of constitution. हर कंट्री जो है स्टूडेंट, सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है. ओके, डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. हर कंट्री का स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अलग अलग है. ओके, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंसेस ऑफ हिस्ट्री. राइट, नाउ सी स्टूडेंट, हर कंट्री की हिस्ट्री क्या है, अलग है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अलग है. उसलिए हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, अलग है. राइट, कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो हर स्टूडेंट, हर कंट्री का कल्चर क्या है, अलग है, उनका ट्रेडिशंस अलग है. तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो डिफरेंट. सिमिलरली स्टूडेंट, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो डिफरेंट. हर कंट्री की स्टूडेंट ज़रूरतें क्या है, अलग है. राइट, सबके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अलग है. इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, अलग है. सो स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन should also look after the background of a country. Okay, and according to that, constitution should be फ्रेम. एक कंट्री का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस सब को ध्यान में रखते हुए क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है. अंडरस्टूड. नाउ विल सी नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है कंट्री को फॉलो करने के लिए, वाई इट इज़ नेसेसरी. सो स्टूडेंट, देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ रनिंग ए कंट्री. ओके, विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजन इंक्लूडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है, वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स. उसी हिसाब से क्या है, एडवांटेजेस भी है. तो लेट्स सी दिस. Government has to function within a set of rules. This reduces the possibility of a misuse of powers and authority that have been given. Now say student, our government has to function according to the rules which has been written in our constitution. Right? Why we have to follow? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करेंगे तो व्हाट हैपन, मिसयूज जो है, ओके, जो पावर्स का, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, वो जो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, क्या होगा उसके वजह से, वो मिसयूज़ कम होगा. ओके, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे तो मिसयूज़ नहीं होगा अपने पावर्स का. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दिस राइट्स. Therefore, people rights and freedoms are safeguarded. Student, we the general public, हमारे कुछ rights हैं, right? तो whenever we are having any problem, we can fight for our rights, है ना. हम हमारे rights के लिए fight करते हैं ना, तो we can go to, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं हमारे rights का, अगर हमको कुछ issue है तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल पब्लिक के राइट्स के बारे में भी लिखा हुआ है. Running a country as per the provision is same as establishing a rule of law. है ना स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके कंट्री चलाना सेम है जिस तरह रूल्स को फॉलो करना है. रूल्स फॉलो करो या कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करो, इट इज़ वन ऑफ द सेम. व्हेन वी फॉलो दिस रूल्स स्टूडेंट, what happen, there is no scope of misuse of power और high handed administration, है ना. अपने अपने पावर्स का मिसयूज़ भी नहीं होगा और कोई भी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा. अंडरस्टूड. कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सम पॉलिटिकल आइडल्स बिफोर द कंट्री. द नेशन इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन. It creates an atmosphere conducive to the attain the world peace and security and preservation of human rights. Now say student, because you know your right, what happened,
यू बिकम अवेयर ऑफ इट। जब हमको हमारे कुछ राइट्स के बारे में पता है तो हम क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, सावधान हो जाते हैं, वी बिकम अवेयर ऑफ इट। एंड यू नो वी ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो आर राइट्स कैन ऑल्सो प्रिजर्व। हम क्या हो जाते हैं सोसाइटी में मेंटेन, वी ऑल्सो मेंटेन ट्राई टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, और हम हमारे राइट्स भी क्या होते हैं उस वजह से प्रिजर्व हो जाते। सो नाउ ऑल्सो स्टूडेंट वी हैव बीन फाइटिंग, वी आर गोइंग थ्रू सच अ क्रिटिकल सिचुएशन। यू ऑल नो कोविड-19 जो चल रहा है ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री जो क्या है क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रही, बट देन ऑल्सो स्टूडेंट each and everyone, each and every people throughout the country are fighting, is working hard for what, क्यों हम इतनी फाइट कर रहे हैं, so that our country should be in peace, ओके ताकि हमारी कंट्री में क्या हो पीस मेंटेन रहे, है ना स्टूडेंट। कोरोना वायरस इतना स्प्रेड हो रहा है फिर भी एवरीवन इज़ ट्राइंग टू मेंटेन पीस इन द कंट्री, हर कोई अपने घर में सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके हैं, ओके। सो दिस ऑल आर अबाउट नेसेसिटीज़, इज ऑल आर अबाउट एडवांटेजेस विच वी हैव टू फॉलो, ओके। Since the Constitution also includes the list of citizen duties, it also fixes the responsibilities of citizen as well. Now see student, we know our rights, we always fight for our rights. हमको हमारे rights पता है और हम हमेशा हमारे rights के लिए क्या करते हैं fight करते हैं। But at the same time what happens student, we should know our responsibility. ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हमारे राइट्स है तो हमको हमेशा कोर्ट में जाना चाहिए, लड़ना चाहिए, नहीं। एट द सेम टाइम हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए जनरल पब्लिक, ओके हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसका भी ध्यान देना चाहिए। सो सिटीजन ऑल्सो बिकम रिस्पॉन्सिबल, अंडरस्टूड। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही एवरीवन, वेदर दे आर जनरल पब्लिक, वेदर दे आर मिनिस्टर्स, हम कौन है एक्सेप्ट वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। सो स्टूडेंट टुडे व्हाट वी हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या पढ़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हमारी कंट्री, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या हो सके स्मूथली कैरिड आउट हो सके। अंडरस्टूड स्टूडेंट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नाउ विल डिस्कस सम एक्सरसाइज, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the dash of the Indian Constitution. Now see student, it is the Dr. Baba Saheb Ambedkar who framed the Constitution, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, इसलिए वो क्या है, he is the architect of our Indian Constitution. 26th November is observed as Constitution Day. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है स्टूडेंट, 26 नवंबर को। देर आर टोटल ऑफ 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 299। अंडरस्टूड। नाउ explain the following concept. Provision of the Constitution. What is this provision student? I explain you. It is a basic or fundamental law that is stated directly in the Constitution. एक law है, एक rule है जो कहाँ पे लिखा हुआ है, Constitution में। Therefore, the rules and provision in the Constitution are the basic or fundamental law of the land. Now second one, Constitution Day. The Constituent Assembly enacted the Constitution and adopted it on 26 November 1949. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ, कब फॉर्म हुआ स्टूडेंट, 26 नवंबर को।
इसलिए स्टूडेंट 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट हम 26 नवंबर क्या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। So student, today we have learned everything about constitution. Okay, we have discussed some exercise also. I hope you all will understand it very well. Remaining half of the chapter we'll discuss in our next lecture. Till that, student, listen the audio properly. If you listen the audio, you will understand it very well. Thank you, student.